We'll take your question towards the end. क्वेश्चन होगा राहुल गांधी को डायनेस्टी पॉलिटिक्स को टाइम कहाँ चला रहा है? राहुल गांधी को अगेंस्ट डायनेस्टी पॉलिटिक्स इन तेलंगाना है कि पिछले 29 सालों में कांग्रेस पार्टी कई बार पावर में रही बट नन फ्रॉम गांधी बीइंग पार्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट देखो दैट हाउ कैन वी डिस्कस क्या इतने सालों में गांधी फैमिली कभी कोई गवर्नमेंट में नहीं रहा, कोई गवर्नमेंट का पार्ट नहीं रहा। कैसे इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी रहा? नहीं मतलब पिछले 29 साल कहते हैं 15 साल राजीव जी के बाद कोई रहा नहीं। हाँ ये 89 के बाद तो कांग्रेस की कितनी सरकारें बनी? 91 में बना, 2004, 2009, 15 साल लंबी कांग्रेस। 11 and 17 is 28. then 5 plus 10 15 थे हमारे। One minute. 2 minutes. गेट पे ही है, गेट पे। क्रिया है कि तो यही है ना? हाँ क्या नाम? क्या नाम है? चले मित्रों शुरू करें। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट।
You are now fighting a national battle. क्या हो रहा है? You have to have your resources. Come on, guys. Okay, friends. Seeing the kind of figures released for the Indian economy, which were discussed yesterday, and more importantly, seeing the kind of reaction of the minister, I think the party has become India's biggest NPA, non-performing asset, or I would say non-performing non-asset. The ease of doing business appears to have become the seas of doing business. The lion who was roaring "Make in India" appears to be snoozing. Yesterday, Mr. Rahul Gandhi asked pointed questions from the Prime Minister about his vision of Make in India, about the reality on the ground of Make in India, and in particular about the state of farmers and farmer distress in India. We continue to have eloquent silence from the Prime Minister, who is on his travels abroad, and we have a series of ambiguities, generalities, and vague reassurances by the Finance Minister. The best way to describe the government's press conference yesterday is to use the adjectives of utter confusion, perplexity, hypocrisy, bewilderment, and even bemusement. Firstly, there is no specific answer to the pointed question, how are you down to 6.1%? Second, there is no frank regret, sorrow or apology that this is exactly what they were told by all of us in November and onwards from last year. There is no recognition and realization. Thirdly, there is no answer to the questions yesterday at the press conference, not even answer to basic questions. The best answer you got was demonetization cannot be identified as the sole reason for low GDP growth. Now you decided that's a good enough answer. Then the second answer you got was sometimes 7 to 8% is a reasonable area of growth. Pray, can I ask, even if sometimes 7 to 8 is a reasonable area of growth, is our country having 7 to 8? Statistical Office figures, not ours, which shows 6% equal to 7 to 8. The third answer we heard was that global factors. This is a delightful answer. We didn't hear a fourth and fifth answer, which is the answer the government and the finance minister gives for every issue. Legacy factors. And the fifth answer is the Congress is to blame. Now please examine these 5 answers and tell me whether they are answers which this country is supposed to get. Is this the accountability which this government is supposed to give? In fact, friends, the truth is sad, the truth is the opposite, the truth is stark
and the truth is deplorable. First, you changed the base year from 2004 to 5 to 11 to 12. Remember, one of the first things which this government did in 2014. Base year change is the first thing, obviously, to inflate, exaggerate and improve. Let us leave that because we are only using that now. On that base year change, you have a clear line, if you draw, of industrial production. Can you imagine how much this Prime Minister has spoken of Make in India? And the heart of Make in India is index of industrial production. What is Make in India without industrial production? He would be worse than Hamlet without the Prince of Denmark. The industrial production index shows a steep decline, roughly from just under 5%. And mind you, friends, this is the first quarter. It's like a train which is going at fast speed. If you put the brakes, those brakes, the train stops after 1 kilometer or 2 kilometers. Well, you've seen the first stage measured till March. Let us wait for the next stage measurement. I told you so. And lastly, on this aspect, I took a briefing with you the other day on jobless growth, where I started by saying, I am assuming for the moment, not conceding, not accepting that there is growth. I said, even if there is growth, it is jobless growth. कांग्रेस से उसके बारे में भी कोई भी जवाब नहीं है. एक जवाब मैंने आज सुना तो मैं चौंक गया, अचंभित हो गया. अभी आज ही सुना है मैंने. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से करवाया. ये मुझे एक तरफ पीड़ा है, दुख है, एक तरफ गुस्सा है इस प्रकार का जवाब सुन के एक संवैधानिक पदाधिकारी से. आपके प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा एक व्यापक प्रदेश माना जाता है, कृषक क्षेत्र में भी और औद्योगिक क्षेत्र में भी. महाराष्ट्र में आजकल हजारों लीटर दूध फेंका जा रहा है, फल और सब्जियां फेंकी जा रही हैं. लाखों की तादाद में कृषक बाहर निकल आ रहे हैं, अभियान कर रहे हैं. प्रोसेशन अपमान है इस देश के किसान का, महाराष्ट्र के किसान का. ये एक दयनीय टिप्पणी है जिससे उस प्रदेश की सरकार का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट होता है कि न वो कोई समर्थन देने वाले हैं कृषक को, न एमएसपी बढ़ने वाली है. हमने आपको इसी मंच से पहले एमएसपी के आंकड़े 100 गुना 50 गुना जो बढ़ी हैं एमएसपी हमारे कार्यकाल में, अब 2-2, 3-3 गुना बढ़ी हैं. और भविष्य में कोई भी फल सब्जियां सड़क पर फेंकने पर मजबूर है, लाचार है, ऐसी चीजें कर रहा है. वो आत्महत्या तो छोड़िए, हमने अलग से आपके समक्ष वो बहुत दयनीय आंकड़े रखे हैं. लेकिन इस प्रकार से तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक, उत्तर से लेकर पूर्व तक कृषक अपने आक्रोश को व्यक्त कर रहा है और मुख्यमंत्री जैसे पदासीन व्यक्ति बोल रहे हैं कि इसने करवा नहीं चाहिए. हमको बच्चा नहीं समझना चाहिए. ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ जानते नहीं हैं, हम जवाबदेही नहीं मांग सकते, अकाउंटेबिलिटी नहीं मांग सकते. आखिर
जब हमने आपके समक्ष आपके खुद के सीएसओ के आंकड़े रखे हैं, जो स्वतंत्र निष्पक्ष एक अलग विभाग है सरकार का, सिर्फ आंकड़ों का विभाग, और वो बताता है कि आप 6% के आसपास घूम रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है? वित्त मंत्री माननीय महोदय कहते हैं ऐसे जवाब जिनका कोई तर्क नहीं, कोई तुक नहीं। एक तरफ कहा जाता है कि डिमोनेटाइजेशन शायद सिर्फ ये क्या उत्तर हुआ? दूसरा कारण दिया जाता है कि कभी कभी 7 से 8% विकास अच्छी दर है। ये तर्कविहीन, उद्देश्यविहीन टिप्पणी है, इसका कोई मतलब नहीं है। कहां तो हमको 7 से 8 मिल रही है और कभी कहीं है या नहीं है, उसका भारत से क्या संबंध है? तीसरा, ग्लोबल फैक्टर्स। मैं तो लोग डांस करना शुरू कर दें स्ट्रीट्स पे। ऐसे ग्लोबल फैक्टर के बाद आपकी दशा यह है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत ऑयल की सबसे महत्वपूर्ण होती है हर देश के लिए। चौथा और पांचवा कारण नहीं दिया, दया की हमारे ऊपर सरकार ने, माननीय वित्त मंत्री ने। चौथा कारण उनका हमेशा होता है लेगेसी फैक्टर्स। तो अब 3 साल बाद शायद वो लेगेसी फैक्टर शब्द का प्रयोग कम कर दिया है, क्योंकि लेगेसी तक बोलते रहेंगे। और चौथा, जो फडणवीस साहब ने महाराष्ट्र में कहा, वो इन्होंने नहीं कहा, कांग्रेस दोषी है। तो मैं समझता हूं आप अपना निर्णय कर लें। ये दयनीय स्थिति है और इस प्रकार के मजाकिया कुतर्की जवाब आ रहे हैं इस दयनीय स्थिति के लिए। धन्यवाद। Anything on the suo motu first? Yeah, anything on suo motu? We'll take. We are here. Don't worry. हाँ जी, हाँ आ रहा हूँ मैं। Because this government can't hear any inconvenient voices, even if those voices are speaking the truth. But numbers don't lie and statistics don't play politics. We told you so is an acronym I could use again and again. But remember, and clearly the statistician meant that, although we don't have the figures fully, is going to show again exactly what we said. But you are not going to get an acknowledgement of that by the government. So this is tragic, this is terrible. Let us not expect apologies, but let there be an acknowledgement. Because without an acknowledgement, how can you reform, how can you improve, how can you change? Everything that you say, all the things, when BJP says that we can't be winning, we could be winning elections if we were so bad. I think you have rightly just exposed the biggest fallacy. In that case, 10 years of our were absolutely fault-free on that definition. Not a single mistake was made by the UPA, because we had 14 odd state elections and 2 central elections. Three, four, five state elections. This arrogance has translated into a notion of infallibility. You judge for yourself. Does the statistician's figure, which is in front of you now at 6%, making India a cease of doing business, not a make in India, not an ease of doing business, but a cease of doing business, and cease is spelled not S-E-I-Z-E but C-E-A-S-E.
Well, if that is to be said, is validated by an election result. Well, I can only say that if the result in UP will become a license to kill for this government to keep on achieving 6 and then 5.9 and then 5.8% growth, well, good luck to them. कोई क्वेश्चन इधर था? सॉरी, हाँ. चुनाव आयोग ने बुलाया है कि आइए और ईवीएम को हैक करके दिखाइए. चुनाव के 17 दलों ने इससे पहले 16 दलों ने इससे पहले दी थी. नहीं, देखिए, ये अलग अलग दलों के अलग अलग स्टैंड हैं. न मेरे पास समय है, न मेरा अधिकार क्षेत्र है कि उन पर टिप्पणी करूं कि दूसरे दलों का क्या स्टैंड है. हमने अपना स्टैंड बड़ा स्पष्ट किया था. मैं खुद उस बैठक में बैठा था और उसके बाद हमने अपना स्टैंड उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी बड़ा स्पष्ट किया था. प्राथमिक रूप से अभी हमने कहा कि जब आप पहले ये देखिए कि वीवीपीएटी का क्या असर होता है. हमने ये भी कहा कि, और मैं तो मानता हूं कि हमारे बार बार कहने से ये फर्क हुआ कि वीवीपीएटी 55 या 50 हजार आपके पास है और 16 लाख ईवीएम्स हैं और उच्चतम न्यायालय का 3 वर्ष पुराना आदेश है, 3 वर्ष पुराना, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, कि आप तुरंत लगाइए वीवीपीएटी. तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या उत्तर है? और सरकार बार बार मांगने के बावजूद, चुनाव आयोग के मांगने के बावजूद अभी तक रुपए नहीं दे रही है. इस अभियान को मैंने यही चीजें आपके समक्ष यहां से भी कही थी. उसके बाद ये 3000 करोड़ में 2019 के पहले हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि अभी और चुनाव है. 18 में चुनाव है, 17 में भी चुनाव है, और ये नहीं समझता मैं कि वो वीवीपीएटी के बिना होने चाहिए. लेकिन फिर भी क्योंकि ये उच्चतम न्यायालय का आदेश है, कम से कम वो देखें कि ये कार्यान्वित होता है कि नहीं. और पार्टियों के दो अलग स्टैंड्स हैं. कुछ पार्टियों का है कि वीवीपीएटी से हमें कोई कनेक्शन नहीं है, हम चाहते हैं कि ईवीएम ही हटे. ये कांग्रेस का स्टैंड नहीं रहा है. दूसरा, कुछ पार्टियों का स्टैंड ये है कि हम चाहते हैं हैकाथॉन में आना, लेकिन हैकाथॉन में आने की जो कंडीशंस हैं, नियम है, उससे हम नहीं है सहमत. तो ये अलग अलग मुद्दे हैं, आप बाकी पार्टियों से पूछें. Good question, because when you talk of errors and a miss, the detail will answer your question. Firstly, of course, all those who ask this question, and by that I mean the BJP and several other parties, constantly raise it. Like an ostrich in the sand, forget to ask the question of the Akalis or of the Shiv Sena, two of their longest allies. Dynasty is forgotten that time. But what Mr. Rahul Gandhi said illustrated a very interesting point. Take a simple example. From 1989, we have passed 28/29 years. Rajiv Gandhi was Prime Minister in 1989 last. For the last 29 years, a Gandhi, despite winning elections, Mrs. Sonia Gandhi in fact resigned contrary to our advice and refought the election on the office of profit issue. Despite being elected again and again, took no office. That's dynasty for you. And secondly, in these 29 years, 15 years have been Congress. 16 years. So let us put things in perspective. I think this has lost its logic. It's lost. Explosive coverage. It's been almost 24 hours now, and this, of course, is pertaining to the damning allegations made by Justice Dehat Commission. And in this report that we have procured, there are clearly, it's talking about Robert Vadra, his alleged nexus with the then Haryana Chief Minister.
went out of his way to give profit to Robert Watra and his so-called shady. Can I now answer? The question is, we haven't ever, whenever this question has come in the public today, Congress has been silent on it. And for a change, without attacking any particular political party, can you please throw some light on the allegations? Is it a question? Is there a question? I actually forgot the question because it's a very short question. By the time I came to answer it, I forgot the question. But anyway, I have partly answered it from this very podium. Perhaps you were missing. And I am fully prepared to answer it today. But let me tell you why I am not answering it. I am not answering it because Republic has launched a malicious witch hunt based on personal prejudice and personal vendetta of those who are running and managing Republic. And we are not here to answer questions from such quarters. But it's a simple question, sir. Justice Digna has come up with a report. It states facts. My answer to the supplementary is the same as my answer to the first question. But why will Congress Give others chance. It's a simple question, sir. You should carry my answer. This is my answer. You should carry my answer. And so why is it putting Let it. ये बात सही नहीं है. देखिए, सरकार के पास ये यंत्र तंत्र होते हैं. ये निर्णय नीतिगत वो लेते हैं. डे 1 से 2014 से इसमें हमने प्रकाशित किया है, बोला है, बताया है. आखिर हम भी तो सरकार में 10 साल तक, हमारे वक्त भी 2008 में भूगोलिक प्रॉब्लम हुई थी, आपको याद है, दरें गिरी थी, हमारे वक्त भी कठिनाइयां आई थी, हम भी बदल सकते थे. अरे भाई, बदलने के बाद अगर आप 6% दिखा रहे हो तो दयनीय नहीं है क्या? और तर्क ये दे रहे हो कि भूगोलिक कारण है. डिमोनेटाइजेशन सिर्फ अकेला एकाकी कारण नहीं है. तो इस बात का भी लेकिन लिया है, बिल्कुल लिया है, कई बार लिया है. Well, I think, well, there must be material and you have to ask that question. If you want, I will check up and let you know. This is a local issue of Punjab government. I'm sure we'll have to check up the files. So I'll just take a liberty, which is coming. So when I asked you that question, I just want to understand why is it that the other fellow journalists What do you mean? questions, you're entitled to. Now, this is very interesting. It's to each of the people outside, please spare me. And you are taking liberties not here, but on your channel. On your channel. Thank you. Thank you. I think the malafidez is shown by the fact that this is unique to one person and one channel. One person.